रिगार्डिंग किसी को कुछ भी? यस, मौसमी, आप बोलिए। जस्ट अ मिनट। ओके, ग्रेट। ओके, सो किसी को कुछ डाउट नहीं है तो हम लोग आज का माइक्रोन्यूट्रिएंट का लेक्चर स्टार्ट करें। ओके। ओके, ओके, फैट के रिगार्डिंग लेक्चर है। जिनेश, बताइए आप क्या डाउट है आपको एज इन फैट के रिगार्डिंग। Yes, what is your doubt, Jinesh? Good morning. Okay. Sorry, I didn't understand. I want to explain section. मैम उनको अनम्यूट का राइट दे दिया है, अगर उनको कुछ डाउट है तो फिर वो पूछ सकते हैं। Jinesh, आपको like do you have given the right of unmute? So you can Hello. ask me. Yeah. Hello. Yes, Jinesh. That's and in Sunday we discuss about the fat and macronutrients, right? Hmm. Yeah, but I'm just fully involved in that session, so I just waiting for the recorded video. But in the recorded video, that's in the full section is in Hindi. But no, I'm not fluent in Hindi, so I can't recognize the full chapter. I mean, the including the fat full area, because I think it's an important session in nutrients. So I want Sure. to get a lecture about that. Or I think that the section is been recording for the next batch. If you're able to recording it, it will be able to send me. That's also possible. I Okay. mean, that's also fine. Okay. I will talk with Prathamesh sir. If he has any lecture recording of fat in English, he will provide you. Otherwise, after this lecture, we will take a 10-15 minutes for that fat topic. Okay? It will be Okay, that revision will for be all fine. of you. Okay? Okay, that Okay, yeah. Because great. please record this session too, because I think all the sessions are recorded in Hindi, right? So please Yes. ask him to record in English and just send just upload Okay. it to the YouTube, please. Because I think many people here are also not fluent in Hindi, so they need to be as English too. That's why. Okay. I will try to explain both language, okay, in Hindi Uh, as well as English. Okay? yeah, please record it too. Okay. Sure. Because Okay. if you are going to revisit the video, so Mhm. it will be more helpful. Okay, sure. Okay. Okay. So today we will start with micronutrient lecture. Okay, last time we discussed like what is there are two different nutrients in macro in nutrient. There are one is macronutrient and other one is micronutrient. The things we consume in grams, those are called as macronutrient. And the things we consume in milligrams, in mg, those are called as micronutrients. So what are the macronutrients? Usually as carbs, macronutrients are carbs, protein, fats, and water. These are macronutrients because we consume these things in grams. And what is micronutrient? The micronutrients are like vitamins and minerals which we consume in milligrams. Okay, there are certain
micronutrients, some certain vitamins or certain minerals we take in grams also. Like for example, in minerals there are calcium. Calcium we consume in 1 gram, 1.5 gram. Okay, maximum limit, or 2 gram also. It depends on if someone is athletic from athletic background. Okay, so that's some exceptional cases are there. In vitamins also there is vitamin C which we consume in like 2 gram, 3 gram, and some cases it has consumed in 8 gram also. There had been a study. One researcher was there, so he did a research on vitamin C. Okay, so in if someone has cold and cough, and he can consume till 6 or 7 or 8 gram maximum, depending on person to person. So while when he consumed that vitamin C, his cold and cough recovered fastly compared to in normal times. Okay, so that researcher has also won a global prize also. Okay, a Nobel Prize, which usually get a scientist. Usually, that scientist has got that award also, Nobel Prize for this research. So there are certain exceptions in micronutrients also, some vitamins and minerals. So in vitamin, as I said, there is vitamin C, which in some cases consumed in grams also, and in mineral there is calcium which is consumed in grams. Okay, so these are exceptionals. Otherwise, mostly micronutrients are consumed in milligrams for normal for average people. Okay, and in certain cases they are consumed in grams. Okay, सो एक बार मैं हिंदी में रिपीट कर देती हूँ. जैसे हमने लास्ट टाइम के लेक्चर में सीखा था कि दो वेरिएशंस होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट. दो टाइप्स होते हैं न्यूट्रिएंट में. मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सी चीजें होती है जिनका इंटेक हम ग्राम्स में करते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सी चीजें होती है जिनका इंटेक हम मिलीग्राम में करते हैं. अभी मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन सी चीजें आती हैं? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है और वाटर है. ये आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में. एंड देन ये आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में. कौन से आते हैं? विटामिन और मिनरल्स आते हैं. ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है. अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट में कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे जो विटामिन या फिर मिनरल्स का इंटेक ग्राम्स में होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मिनरल्स में देखा जाए तो कैल्शियम एक है. जो कैल्शियम है उसका इंटेक ग्राम्स में होता है इन सम एक्सेप्शनल केसेस या फिर सम एथलेटिक पीपल. अभी नॉर्मल जो एवरेज पीपल है वो कैल्शियम 250 mg 500 mg तक लेते हैं. बट इन सम केसेस 1 gram, 1.5 gram, 2 gram इज ऑल्सो कंज्यूम्ड. Okay, and in vitamin C, what some people consume in 2 gram, 2.5 gram, 3 gram. So, विटामिन सी के लिए एक ऐसे रिसर्च की गई है. एक साइंटिस्ट है, उन्होंने रिसर्च किया था कि 8 ग्राम तक भी जो पर्सन है वो इंटेक कर सकता है विटामिन सी का. और इस कोल्ड एंड कफ केस में अगर उनको कोल्ड कफ ऐसा कुछ हुआ रहेगा, जो भी सीजनल उनको बीमारी रहती है जैसे कोल्ड कफ, तो उसमें अगर ये कंज्यूम करते हैं तो उनका कोल्ड कफ कंपेरेटिवली ज्यादा जल्दी रिकवर हो जाता है. अभी इस रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज भी प्रेजेंट किया गया है. ओके, सो अगेन दीज आर एक्सेप्शनल केसेस. दीज आर done under supervision and under proper guidance. Okay, so these are these things. But है कि these are what exceptional things. Micronutrient में ये exceptional nutrients है. Okay, these are rare cases. कैल्शियम है, हर कोई 1000 mg में, यानी हर कोई 1 ग्राम में, 1.5 ग्राम में नहीं कंज्यूम करता. किसी की रिक्वायरमेंट 250 ग्राम्स भी हो सकता, 250 mg भी हो सकती है, किसी की 500 mg भी. सो दीज आर व्हाट एक्सेप्शनल केसेस. ओके, तो ओके देखिए कैलोरीज. जसवी सर हैज a doubt कि how many calories a person needs to how to find out that. See ये कैलोरीज का जो है ना क्वेश्चन आपका BMR का जो लेक्चर है उसमें आपको एड्रेस किया जाएगा. There is a separate dedicated lecture for this question like BMR, and in that lecture we will discuss all these like how to like analyze or how to calculate how a person's metabolism, his calorie expenditure. Okay, so a specific question will be, there is a dedicated lecture for this specific question. Okay, so now we will focus on micronutrients. Okay, so micronutrients जैसे मैंने बताया, there are two types, mineral and vitamin. As I said, there is two types in micronutrients. One is mineral and one is vitamin. Okay, so micronutrient, what is the role of micronutrient? Micronutrient का exactly काम क्या होता है? Micronutrient as required for energy for your metabolism
your nervous system function, your bone and teeth health, your fluid balance, your function as antioxidants. As in, a micronutrient is kind of thing which works passively in a body. Okay, there are some things. अभी देखिए, for example, as you work, okay, if you work in a corporate sector, there are some things, some passive things are there. Like, as you know, if you work there in your corporate office, this is a big building. There is what a cafeteria. Okay, there is a cafeteria, one resting area is there. Okay, so now tell me, this cafeteria and resting area इन दोनों की वजह से ही आपका कॉर्पोरेट बिल्डिंग या फिर आपका कॉर्पोरेट ऑफिस चल रहा है क्या? नहीं ना, अगर आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में दो चीजें हैं, देयर इज वन कैफेटेरिया एंड देन वन रेस्टिंग एरिया. These two things are not active and actively like एक्टिवली आपको जो है ना, क्योंकि ग्रो करने के लिए हेल्प नहीं कर रही है, एक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है टू ग्रो दैट कॉर्पोरेट ऑफिस और टू ग्रो दैट कंपनी. But why still there are, in every office you will see there is a cafeteria area and there is a resting area. Why these two areas are there? Because why? These are passive areas. Okay, these are passive things. Passive things, these are small things which help. These are micro things, but they help in many functions. Okay, when there is a resting area, जो भी आपके staff है, आप you are employees, so you feel like relaxed and you can focus again on your work. Okay, when there's a cafeteria, you can go eat something, get some refreshments, and then you can work again motivated. So these things are what? Passive things. These things are what? Micro things. But these micro things contribute majorly in your work. Okay, these are what? Passive things. So वैसे ही micronutrient होता है. Minerals or vitamins are not actively contributing in your work or in your body, but these are what? Passive things. Passive things which helps in your body run smoothly. ओके, अगर आपके ऑफिस में कैफेटेरिया या फिर जो रेस्टिंग एरिया नहीं है, तो व्हाट यू गेट टायर्ड कि आपको जाने का मन नहीं करता, क्योंकि 9 hours यू लाइक हाँ कहाँ पे जा रहे हैं. बट व्हेन देयर इज नो रेस्टिंग एरिया, आप आपके वर्कआउट के बीच में एक 5 minutes का ब्रेक लेके थोड़ा वहां पे रेस्ट करके थोड़े अपने कोवर्कर से हंसी मजाक करके आप ऑफिस आ सकते हैं. सो दिस थिंग्स व्हाट? दीज आर माइक्रो, दीज आर पैसिव थिंग्स विच हेल्प्स इन लाइक आप फिर से एनर्जाइज फील करते हो, आप फिर से काम पे फोकस करते हो, एंड देन यू वर्क गुड. आपकी कंपनी है जो अच्छा ग्रो करती है. ओके, सो दैट इज हाउ माइक्रो थिंग्स वर्क. Micro things don't contribute things majorly and actively in any work. Micro things works passively. Okay, so this is same like minerals and vitamins. Okay, so Janice, did you get this, or should I explain again the whole thing like more in detail in English? Okay, so still I'll repeat once. What are micro things? Fine, no? Great. So as I said, micro things are what? Passive things. These passive things helps in contribute in growing things passively. Okay, they don't contribute actively. They don't contribute majorly. But these micro things, these passive things, contribute in small, but they help in running things smoothly. Okay, so that is what contribution of micro things. Okay. So, there's, as you know, there are two categories, vitamins and minerals. But now, you know why vitamins was now name was given there. Earlier, this vitamins was called as vitamins. Okay, vitamins. So because there was a conception कि जो विटामिन है ये काफी एक अमाइन ग्रुप है, and then it is what vital for your life. Vital as in क्या है? Important. Vital यानी बहुत, as in water है. Water क्या है? हमारे लिए vital है. Okay, you cannot survive without water. So water is what? Vital. So vitamins के लिए conception हिंदी में था. Okay, हिंदी में है. So vitamins के लिए conception है कि vitamins जो है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, उनके बिना लाइफ नहीं चल सकती, वो वाइटल है बहुत लाइफ के लिए. ऐसा कंसेप्शन विटामिन के लिए अर्लियर था. देन जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने आगे ये किया, जो और रिसर्च की, तो उनको पता चला विटामिन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी क्या है? नेचुरल फूड्स में अवेलेबल रहता है. ओके, ऑर्गेनिक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक फ्रूट है, ऑर्गेनिक वेजेस हैं. सो व्हाट इज ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक इज लाइक कि नेचुरली नेचर में अवेलेबल है. These are what? Organic compounds जो आपको वैसे easily available है.
आपको भी विटामिन या फिर कुछ चाहिए, कोई फ्रूट्स में अगर विटामिन है, तो आपको कुछ उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा क्लीनिंग, बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली कोई भी नियर बाय आपके गार्डन है, वहां से आप कोई भी फ्रूट तोड़ के ला के खा सकते हो। ओके, सो दैट इज व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो विटामिन क्या है? विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अर्लियर रिसर्चर्स को क्या लगा था? विटामिन एक वाइटल कंपाउंड है। वाइटल कंपाउंड यानी लाइक वाटर for our life. Water is what? Vital compound. Without water, we cannot survive more than 6 or 7 days. Okay. So what? Water is what? Vital for life. Vitamins are passive things. अगर नहीं भी होगा, अगर आप विटामिन का इंटेक नहीं भी कर रहे हो, तो भी योर बॉडी विल सर्वाइव। इट वोंट रन दैट स्मूथली एज स्मूथली इट शुड बी, बट देयर विल बी लाइक चल जाएगा, ऐसे बताओ ना, चल जाएगा। इट वोंट हार्म एटलीस्ट मच एट मोर लेवल। बट वाटर क्या है? वाटर वाइटल है। आप वाटर को 6-7 days अगर भी छोड़ दोगे, सो इन दैट पर्सन कैन बी लाइक विल बी इन वेरी बैड स्टेट। ओके, ही विल बी नियर डेथ। ओके, सो व्हाट? वाटर इज वाइटल फॉर लाइफ। ओके, सो दैट्स व्हाई विटामिन्स वर नेम्ड आफ्टर दैट वाइटल। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। रवि, आपको यहाँ पे नहीं समझा है कुछ? मैं फिर से हिंदी में एक्सप्लेन करूँ? ओके, फिर भी मैं एक बार कर देती हूँ। विटामिन के लिए क्या था ना, जो अर्लियर रिसर्चर्स ने रिसर्च किया था, तो विटामिन के लिए रिसर्चर्स को क्या लगा था कि विटामिन बहुत वाइटल है। वाइटल मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ह्यूमन बॉडी रन ही नहीं कर सकती। ऐसा उनको शुरुआत में रिसर्चर्स को लगा था, तो उन्होंने विटामिन का नाम ना पहले विटामिन को बोलते थे वाइटामिन। वाइटामिन मतलब क्या लगता था उनको? काफी वाइटल है। वाइटल का मतलब क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन लाइफ के लिए। अभी वाइटल ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है? पानी है। अगर हम पानी का इंटेक नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा? हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 6 to 7 days में सामने वाले की नियर डेथ जा सकता है सामने वाला। ये वाइटल हो गया एक्सपीरियंस। ओके, सो ये होता है। इसलिए क्या होता है? वाइटल वाइटल विटामिन जो है वाइटल नहीं है। विटामिन क्या है? नॉर्मल है, पैसिव है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंटेक करोगे तो अच्छा है, नहीं करते तो भी बॉडी चल जाएगी। करोगे इंटेक विटामिन का, तो क्या होती है? बॉडी स्मूथली चलती है। और ओके, अगर आपकी देखिए कोई भी डेली लाइफ की चीजें हैं, अगर देखिए आपके पास एक स्कूटी है, एक कार है, अगर आप क्या कर रहे हो? अगर डेली वॉश नहीं करोगे, फिर भी चली जाएगी ना। वाइटल नहीं आपकी गाड़ी के लिए कार वॉश या फिर स्कूटी वॉश। आपकी गाड़ी चली जाएगी, हाँ थोड़ी मतलब इतनी स्मूथली नहीं चलेगी। आपको शायद आपका विंडशील्ड क्लियर नहीं होगा, तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, टायर ज्यादा खराब होंगे, तो थोड़ा रन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट क्या होगा? वाइटल नहीं है वो कार वॉश, स्कूटी वॉश। वो क्या है कि हाँ भाई करेंगे तो अच्छा ही है, गाड़ी और स्मूथली रहेगी और अच्छी चलेगी। नहीं करेंगे तो भी गाड़ी चलने ही वाली है, थोड़ी आगे पीछे चलेगी लेकिन चलेगी। वैसे ही विटामिन है। विटामिन क्या है? विटामिन पैसिव है, विटामिन माइक्रो है। उनकी हेल्प रहेगी तो बॉडी अच्छे से चल जाएगी। मतलब अच्छे से मतलब स्मूथली चल जाएगी। नहीं यूज करोगे तो भी चलने ही वाली है। वैसे इसलिए पहले क्या था? कंसेप्शन रिसर्चर्स का ऐसा था कि वो वाइटल है। फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि जो विटामिन है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है? जो नेचुरली हमें नेचर में इजीली अवेलेबल होता है। ओके, सो विटामिन को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें उनको अचीव करने के लिए, अगर आपको देखिए ऑरेंज में विटामिन सी होता है। अगर विटामिन सी आपको ऑरेंज में से चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं कि ऑरेंज लेके जाके प्रोसेस करके फिल्टर करके फिर आप खाएंगे तो आपको विटामिन सी मिलेगा। ऐसा नहीं, आप नेचुरली ऑरेंज पेड़ से तोड़ोगे, खाओगे, आपको विटामिन सी मिल जाएगा। जितना भी उसमें है XYZ अमाउंट, उतना आपको मिल जाएगा। ओके, ये फर्क है। ओके, आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। Okay, so there are two types in vitamins also. One is water soluble, other one is fat soluble. अभी वाटर soluble क्या होता है? वाटर soluble मतलब कोई भी चीज है वो पानी में एक साथ मिक्स हो जाती है। ओके, पानी में मिक्स हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? वाटर soluble। फैट soluble क्या है? कि कोई भी फैटी सब्सटेंस है, जैसे ऑयली सब्सटेंस है, तो ऑयली चीजों में वो जल्दी soluble हो जाती है, उसको बोलते हैं फैट soluble। Okay, there are two types in vitamins. One is water soluble and another one is fat soluble. The water soluble vitamins dissolve in water very easily, and fat soluble dissolve in fatty substance like oily substance. They dissolve in fatty substance easily. So what are water solubles? Vitamin B and vitamin C are water soluble substance, and fat solubles are vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K.
So as you saw, if you know the examples, if any one of you take vitamin B or vitamin C supplements, आप में से कोई भी है जो विटामिन बी या फिर विटामिन सी का सप्लीमेंटेशन करता है या फिर खाता है डेली वर्कआउट से पहले वर्कआउट के बाद? Okay, so okay. So is there anyone who take vitamin B or vitamin C specifically? Yes. So Rakesh, have you seen कि अगर आप विटामिन सी का इंटेक है, अगर like if you Rakesh take vitamin C, so Rakesh, have you seen कि आप जब विटामिन सी का इंटेक जब करते हो तो आपका जो यूरिनेशन है वो थोड़ा येलोइश हो जाता है. ओके, सो जो कंपेयर टू नॉर्मल डेज, ओके, अगर आपने एक्सेस थोड़ा इंटेक थोड़ा ज्यादा कर लिया उसका विटामिन सी का, ओके, या फिर विटामिन बी का, यस, बिकॉज व्हाट विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल. तो जो भी आप वाटर डिजॉल्व करते हो बॉडी से, मतलब जो वाटर है जो रिलीज करते हो, तो उसमें क्या होता है, विटामिन सी का जो कलर है, विटामिन सी इन कलर थोड़ा ऑरेंजिश थोड़ा येलोइश होता है. तो वो क्या होता है, जो कलर डिजॉल्व होके येलोइश या फिर ऑरेंजिश जो भी कलर है वो रिलीज होता है. ओके, it's like that कि vitamin C and vitamin B are what water soluble. So if you take intake of this, your urination color will be slight change. There will be a slight dark yellowish or dark orangish something color. Okay, because what these supplementation are what water soluble supplementations. Okay, so that's how we can. If you take vitamin E, vitamin D, vitamin A, there won't be any changes in your urination pattern. Why? Because these are fat soluble things. If you take this intake like vitamin E, vitamin D, vitamin A, these are what fat soluble. So if majorly if you see vitamin E, that is what it is good for your skin. So if you take a continuous supplementation of vitamin E, vitamin E as well as omega-3, your skin and your hair will be shiny. Why? Because fat soluble. And your skin is what? A layer of fat. Your hairs are what? A layer of, there is a shine is what? Layer of fat. So if you take a right intake of vitamin E and omega-3 for minimum 3 months at least, so what? Your skin and your hair will be what? Glowing little. Like it will be a glow in your skin and your hair. There will be a shine in your hair. ओके, जब आप विटामिन ई या फिर ओमेगा 3 का इंटेक कम से कम 3 महीने तक लेते हो, तो क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो थोड़ा शाइन करती है, थोड़ा ग्लोइंग लगती है, आपके हेयर्स है वो थोड़ा शाइनी लगते हैं. क्यों? क्योंकि विटामिन ई एंड ओमेगा 3 और व्हाट दीज आर व्हाट लाइक फैट, जो फैट सॉल्युबल है. और आपकी स्किन की जो लेयर है उसमें क्या है, स्लाइट फैट का लेयर है. आपकी जो हेयर्स है उसमें जो शाइन है वो भी क्या है, फैट का है लेयर. इस वजह से क्या होता है, विटामिन ई आपको ऐसे रिफ्लेक्ट होता है. एंड विटामिन बी एंड विटामिन सी आर व्हाट, दीज आर वाटर सॉल्युबल, तो वो आपको यूरिनेशन में दिखता है. ओके, आई होप यहाँ पे किसी कुछ डाउट नहीं है. Okay. So जो minerals हैं, okay, there are two types in minerals also. What? Macronutrients and micronutrients. अभी what macro and micro minerals? Okay, as we discussed earlier, जिन चीजों का intake हम थोड़ा higher quantity में लेते हैं, those we called as macronutrients. And जिन चीजों का intake we take in micro quantities, in small quantities, we call them as micro. Okay, so these are what, there are two categories in minerals. First is macro minerals and the other one is micro minerals. Okay, so micro minerals क्या होते हैं and macro minerals? Okay, so minerals are inorganic chemicals, okay, such as like nitrogen or compound of element. Okay, usually what inorganic as in what we don't get easily, okay, we cannot consume them in raw form. Okay, inorganic मतलब क्या होता है, inorganic things are like we cannot consume them in a raw form, or we cannot find them easily in nature, or like easily आप उनको naturally खा नहीं सकते. Okay, there are calcium and mineral substance in different kind of waters. Okay, but waters or soil, can you eat soil for that calcium or for mineral? No, you cannot. Okay, these are naturally available, but you cannot
have their intake naturally. So what we have to do, we have to do filter and we have to go process, and there is some system we have to follow to get that minerals. ओके सो अभी मिनरल्स का क्या होता है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं. जैसे विटामिन देखो, विटामिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, आपको नेचुरली मिल जाते हैं, आप रॉ फॉर्म में खा सकते हो. बट मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरल मिल तो जाते हैं पर आप उनको रॉ फॉर्म में खा नहीं सकते हो. मिनरल्स किस में होते हैं, सॉइल में होते हैं, लाइक सॉइल में होते हैं, वाटर में होते हैं, इन सारी चीजों में होते हैं. क्या आप सॉइल या फिर वाटर खा सकते हो, नहीं खा सकते हो. तो आपको क्या करना पड़ता है, सर्टन प्रोसीजर से जाना पड़ता है, जिस प्रोसीजर में क्या होता है, ये सारी चीजें फिल्टर होती है. ओके तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर क्लासिफाइड ऑन द क्वांटिटी दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. मिनरल्स कैसे, अगर बॉडी की जैसे रिक्वायरमेंट है कि minerals are what classified on the quantity that required by the body. What happens, like as I said before, calcium is what required in macro quantity. But as you say, there's iron, there's a zinc, there is a like copper. So these things are what required in microgram. Okay, these are required in micrograms. Like what mcg, what we call, there is a mg milligram, and there is a more lower quantity what that is what microgram, so mcg. So what हमारी बॉडी है, टू डिफरेंट क्वांटिटीज में रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स में भी. फर्स्ट इज mg and there is a microgram, what is what mcg. Okay, so that's where minerals are categorized into two different categories. First macro mineral and the other one is micro mineral. Okay, micro mineral are needed in smaller amount. माइक्रो मिनरल्स जो रहते हैं वो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं. ओके जैसे मैंने बताया, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, ये सारी चीजें क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है. और मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, थोड़े लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं. जैसे मैंने बताया, कैल्शियम होती है, मैग्नीशियम होती है, जो तो ये सारी चीजें क्या होती है, थोड़ी मैक्रो लेवल पर रिक्वायर्ड होती है. ओके ये सब चीज किसी को नहीं समझा है, कोई चीज इंग्लिश या फिर हिंदी में किसी को कोई चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, anyone requires any explanation in English or Hindi? Has everyone understood the concept? Great. Proceed further. Okay. So exercise can lead to the increased micronutrient utilization and degradation as well as losses of minerals in sweat and urine. ओके सो जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज में क्या होता है, जो इनटेक जो रहता है माइक्रोन्यूट्रिएंट का बढ़ जाता है. व्हाई? बिकॉज एज यू सी व्हेन देयर इज एज यू नो, अभी फॉर एग्जांपल वी विल टेक अ ऑफिस एग्जांपल. एक ऑफिस में क्या है, कैफेटेरिया है एंड देयर इज व्हाट, रेस्टिंग एरिया. सो व्हेन द एम्प्लॉयज विल इंक्रीज, दे हैव टू इंक्रीज द फूड सप्लाई इन कैफेटेरिया एज वेल एज. ओके वैसे ही है, जब आप आपकी बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ाते हो, उस टाइम पे क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं. बिकॉज व्हाट योर बॉडी मूव्स मोर, so it requires more things for to function properly. Okay, so what micronutrients, when there is a micronutrient requirement बढ़ जाता है आपका. Okay, when your body is more active than usual, so what your body will require more micronutrient, because what, in sweat, in urine, your body secretes minerals. Okay, your body releases minerals, there are some, so there is a loss of minerals in sweat and urine. ओके जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी क्या करती है, जो मिनरल्स है वो स्वेट और यूरिन के जो वे होता है उससे वो बाहर रिलीज कर देती है. तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स होती है. अभी एथलीट्स क्या रहते हैं, एथलीट्स देखिए लीन मसल मास मेंटेन करते हैं, इसलिए उनको क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. जैसे आप देखिए, अगर कोई भी स्पोर्ट्स कार है, तो कोई स्पोर्ट्स कार है जो प्रॉपर रेसिंग के लिए वगैरह यूज होती है, तो उसका मेंटेनेंस कंपेयर टू नॉर्मल कार से ज्यादा ही होगा. ओके वैसे ही है, अ नॉर्मल पर्सन हु वर्क्स फॉर 9 to 5 टाइम इन अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, 1 hour वर्कआउट एंड देन रेस्ट इन हिज लाइफ, वॉट एवर ही डज. So that's a normal person. An athlete person moves more. He has more, like he has to work out. He has many things to attend. So what athletes क्या होता है, athletes का body type थोड़ा अलग होता है, तो उनको क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है.
ओके, सो ये फर्क होता है जो नॉर्मल ले पर्सन और सेडेंटरी पर्सन और नॉर्मल रूटीन पर्सन what requires a less amount of micronutrients and an athlete who requires more amount. Okay, as we discuss a difference between a sports car and a normal car. जो नॉर्मल कार होती है उसका मेंटेनेंस डेफिनेटली एक नॉर्मल रेंज में होगा, कम होगा, मिनिमल होगा, बट वही एक स्पोर्ट्स कार है उसका क्या होता है, जो मेंटेनेंस लेवल होता है, जो मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है वो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा होगा. Why? Because it has to perform. Okay, that sport cars has to perform at certain level at certain speed. Okay, so that's why what there is a difference between athletic and normal person body types. Okay, एक normal person का body type and एक athletes का body type में फर्क होता है. Okay, और उनका maintenance level क्या होता है, different होता है. ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको कुछ भी डाउट है आप चैट में मेंशन कीजिए. ओके, इफ एनीवन हैज एनी डाउट ही कैन मेंशन और शी कैन मेंशन इन चैट. ओके, so many of vitamin B, like there are example like thiamine, riboflavin, these are what needed for energy production, protein, fatty acid synthesis, and carbohydrate metabolism. And now you know what vitamin B are naturally found in what carbohydrates. That's why as we say carbohydrate, a good quality carbohydrates. Okay, by carbohydrates I mean that by carbohydrate I mean that you should intake a good quality carbohydrate. By carbohydrate I don't mean a burger or a patty or whatever junk food you are eating. By carbohydrate I mean good quality carbohydrate. Okay, fruits and everything. Okay, so that's a difference. So several of these nutrients cofactors in the Krebs cycles, a series of chemical reactions that release a chemical energy. Now what happens to several of these nutrients, they are cofactors. Okay, Krebs cycles है, series है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, several things and nutrients are what cofactors होती हैं. जो Krebs cycles हैं उसमें वो क्या, Krebs cycle एज क्या होता है, केमिकल पाथवे होता है. देयर इज अ केमिकल पाथवे इन योर बॉडी, a chemical cycle which happens, that a certain chemical cycle which is called as Krebs cycle. Okay, there are some chemical reaction and then some energy is released. Okay, why in that Krebs cycle nutrients as specifically micronutrients are required. Okay, iodine, chromium, iron are also involved in also involved in energy metabolism. As you know, iodine it founds in salt. In salt there is iodine. Okay, chromium, iron are naturally available in many things. Okay, so iodine as we saw, what iodine is a structural component of thyroid hormone, responsible for regulation of growth and development in metabolic rate. Iodine क्या होता है, एक structural component होता है thyroid hormone का. जो thyroid hormone है उसके structural इसमें क्या होता है, hormone में क्या होता है, iodine होता है, और जो regulation of growth और development metabolic rate में help करता है. मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना, देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो आपके बॉडी का पर डे का, अभी आपके बॉडी में क्या होता है, पर डे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि जो ब्रेक डाउन होती है और जो न्यू बनती है. मतलब कि बहुत सारे सेल्स होते हैं ना जो पर डे नए बनते हैं और बहुत सारे सेल्स ऐसे बॉडी में होते हैं जो पर डे डिस्कार्ड भी हो जाते हैं. मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि पर डे आप कितनी कैलोरीज है वो यूज कर रहे हो और कितनी कैलोरीज है जो आप स्पेंड कर रहे हो एंड कितनी कैलोरीज आप स्टोर कर रहे हो. तो ये जो है ये बेसिक पर डे का आपका जो कैलकुलेशन होता है बॉडी का, कितनी कैलोरीज यूज करनी है, इतनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, इतने सेल्स हैं जो डिस्कार्ड कर देने हैं कि हाँ अभी हो गया ये सेल्स का लाइफ खत्म हो गया, ये सेल्स को डिस्कार्ड करना है, देन वी हैव टू फॉर्म अ न्यू सेल. सो दिस इज ऑल द कैलकुलेशन एंड रेगुलेशन इज इन योर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. Okay, now you know if you are from fitness industry, you must know the catabolism and the anabolism thing. Okay, Rakesh, do you know what is catabolism and anabolism? Or have you heard about this catabolism or anabolism? ये दो वर्ड आपने सुने हैं? ओके, सो ये दो वर्ड्स आपने सुने तो जरूर होंगे आपके डेली, अगर आप जिम में करते हो, वर्कआउट करते हो या फिर कुछ आजू बाजू में आपने सुने होंगे. यस, सो अभी कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन. आपके बॉडी के जो भी मसल, जैसे मसल ब्रेकडाउन हो गया या फिर कोई ऐसे सेल्स हो गए जिनकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनका ब्रेकडाउन होना, यानी फिर क्या उनको डिस्कार्ड करने का जो प्रोसेस स्टार्ट होना, तो वो क्या बोलते हैं कैटाबॉलिज्म. यानी क्या होता है, चीजों को ब्रेकडाउन.
एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, उनको ग्रो करना। ऐसी चीजें हैं जो बॉडी में बढ़ना, जो बॉडी में क्या होना है, बढ़ रही है चीजें, उनको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। लाइक जो मसल रिपेयर होता है, वो मसल रिपेयर को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। ओके, राइट। ग्रोथ इज व्हाट, एनाबॉलिज्म। Okay, your body is repairing, is what called as anabolism. And when there is a breakdown in your body, it is called as catabolism. So the whole procedure of anabolism, catabolism, okay, this whole procedure is called as metabolism. Okay, so जैसे हम लोग बोलते हैं जो एक जो रहता है कि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, जो ये प्रोसेस हो रहा है आपके बॉडी में, उस प्रोसेस का जो कैलकुलेशन है, उस प्रोसेस जो होल प्रोसेस है, उस होल प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। ओके, सो एवरीवन क्लियर ऑफ दिस वर्ड? राकेश आपको समझा मेटाबॉलिज्म क्या है? गुड। ओके, सो क्रोमियम क्या रिक्वायर्ड होता है, क्रोमियम इज रिक्वायर्ड फॉर इंसुलिन फंक्शन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। सो नाउ व्हाट इज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज व्हाट, जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है, जो ग्लूकोज, जैसे हमने लास्ट कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में पढ़ा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस, एज इन व्हाट, व्हेन देयर इज अ ग्लूकोज रिक्वायर्ड, अ न्यू ग्लूकोज इज व्हाट जनरेटेड इन आवर बॉडी, इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। सो व्हाट इज दैट, इज व्हाट, जब ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट होता है, जब ग्लूकोज को डिस्कार्ड करना होता है, यूटिलाइजेशन करना होता है, तो ये जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, तो उसके लिए क्या होता है, इंसुलिन को फंक्शन करना पड़ता है। इंसुलिन कौन सा है, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके बॉडी का शुगर एंड ग्लूकोज लेवल मैनेज करता है। ओके, तो क्रोमियम क्या, क्रोमियम रिक्वायर्ड होता है इंसुलिन को फंक्शन करने के लिए। इंसुलिन किस चीज को फंक्शन करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को फंक्शन करता है। ओके, so I hope you are getting this. Okay, chromium is what required for insulin function, and insulin what, what handles glucose metabolism. Okay, I hope यहाँ तक किस सब कुछ समझा है सबको, कोई चीज है जो नहीं समझ रही है? ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Iron work as component of some proteins and enzymes which have role in metabolism and oxygen transport. Now, iron has many responsibilities. Okay, iron क्या करता है, आपकी बॉडी का जो प्रोटीन है, जो एंजाइम्स है, उनका जो रोल है मेटाबॉलिज्म में, एज वी सी, प्रोटीन है, प्रोटीन का क्या है, आपके जो हेयर का जो है केराटिन प्रोटीन है, आपके स्किन का कोलेजन प्रोटीन है, आपके मसल्स में जो रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की, जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, जैसे एंजाइम्स हमने किया था, देखा था, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जो प्रोटीन के लिए कौन सा है, पेप्टेज एक एंजाइम है, फैट के लिए कौन सा है, लाइपेज है। ओके, जो कार्ब्स के लिए कौन सा है, अमाइलेज है। तो ये सारे जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स को जो वर्क करता है, तो ये सारे एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, इन सबके जो कंपोनेंट्स है, इनके मेटाबॉलिज्म, इनके ट्रांसपोर्ट, मतलब ऑक्सीजन आप इनटेक जो करते हो, वो ऑक्सीजन इनटेक जो वाटर में ऑक्सीजन होता है, इनका ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें कौन देखता है, आयन देखता है। ओके, आयन क्या हो गया, आयन एक तरह से आप बोल सकते हो क्लास मॉनिटर में। ओके, आयन क्या करता है, वर्क करता है कि भाई प्रोटीन कहाँ पे करना है, एंजाइम कहाँ पे करना है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है। ओके, सो एज यू सॉ, इफ यू आर इन स्कूल, यू हैड a class monitor. Class monitor what checks homeworks, और ये आपकी जो होमवर्क है वो चेक कर रहा था, वो क्या, अगर कोई ज्यादा बात कर रहा है तो उसका जो बोर्ड पे नाम लिखता था। सो समथिंग लाइक दैट, यू कैन अंडरस्टैंड द आयन व्हाट, आयन इज लाइक अ क्लास मॉनिटर। ही इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ योर बॉडी, ही इज व्हाट, अ क्लास मॉनिटर। अ सर्टेन एरिया इज गिवन टू हिम कि हाँ भाई ये दो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपको करनी है। ओके, so I hope you get this. So iron is what, like a class monitor. He handles what, proteins and enzymes in your body which have metabolism. It is a work, it is a major component in that, in what, oxygen transport. Okay, so in iron sulfur enzymes, iron participates in single electron transfer reaction and primarily energy in metabolism. So what iron, what is done, there is an electron transfer in your body reaction. So what, for energy metabolism, iron is what, primary. Reason primary is like in front is there, so he handles all the things. Okay, so iron is what, important for your body. Yeah. During exercise, there is skeletal muscles use of energy increases up to 100-fold. In fact, thiamine and riboflavin intake is sometimes reported as a microgram per 100 kilocalories because of their importance in energy production. Again, what we there is separate intake of what, as we see what like right here, there is a microgram of 100 kilocalories is required sometime. So again, this specifically what
this intake is taken under specific, certain conditions. It is not required, in daily basis. In certain cases, it is required. Vitamin B is widely distributed throughout the food types. Deficiency in riboflavin and vitamin B6 have been reported in female athletes who are vegetarian or eating disorder or have eating disorders. Okay, so vitamin B is what usual vitamin B is required for those people who are vegetarians or have eating disorders. उन cases में उनको ये दिया गया है. In cases where some some deficiency, or some people, if some female has a eating disorder, those females are supplemented with what? Vitamin B. Okay, for what? To to complete the deficiency of riboflavin and the other vitamin B6. Okay, so mild riboflavin and B6 deficiency do not appear to lead in diminished aerobic capacity. यूजुअली क्या होता है ना, विटामिन B6 या फिर माइल्ड जो राइबोफ्लेविन की जो डेफिशिएंसी होती है वो इजीली होती दिखाई नहीं देती. जैसे बहुत सारी विमेन्स हैं जो 30s में रहती हैं या फिर ऐसे, उस टाइम पे क्या होता है उनको विटामिन B6 की डेफिशिएंसी दिखना शुरू हो जाती है. तो आफ्टर 30s वो दिखती है, बिफोर 30s वो नहीं पता चलती. ओके, so excess vitamin B6 intake while supplementation can lead to sensory neuropathy. Now, as we said, these are what, when there is a specific B6 and these things are what? These things are taken under certain condition, under some special condition. So these are what mostly should take people under a physician's guidance. Okay, you should not take this intake without any physician's consultation, because क्या होता है ना, certain एक deficiency है, उसी cases में vitamin B6 लिया जाता है. So you should not take, you should never take, or you should never suggest any of your client to take vitamin B6. Why? Because vitamin B6 is what? A specific, taken under specific condition, and if a high excess intake can, lead to sensory neuropathy, which often presents in pain and numbness in hands and feet. Okay, so you should never recommend, or this is not our part, this is mostly a physician's part. That's why you should know that vitamin B6 is what? Taken under certain or a special circumstances or in special conditions. Okay, so niacin. Niacin is what? Toxicity includes itchy, red, and warm skin dizziness and leg cramps. Okay, folate upper limit. Folate, as you know, folate, there is a micronutrient. It should also give folate acid or can mask vitamin B12 deficiency. Sometimes what? Folate upper limit. There is in your body. That's why these conditions are what? These conditions are under special conditions. So you should never take any minerals, intake on your own. Any minerals should be, consulted before taking. So minerals should be, vitamins क्या होता है ना, vitamins body से throw out हो जाते हैं, पर मिनरल्स उतने नहीं हो पाते. दैट्स व्हाई मिनरल्स क्या टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देती है आपकी बॉडी में. इसलिए कोई भी मिनरल्स हैं जो विदाउट कंसल्टेशन आपको नहीं लेने चाहिए. ओके, सो कैल्शियम इज व्हाट? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बोन. कैल्शियम क्या करता है? कंबाइन करता है फॉस्फोरस के साथ एंड फॉर्म हाइड्रोक्सी एपिटेट एंड हार्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड गिव्स अ बोन्स देयर स्ट्रेंथ. ओके, so bones, calcium क्या होता है? Calcium is a basic structural component of your body and it combines with phosphorus and to form a hydroxyapatite and a hard crystalline structure. like जो hard crystalline structure हमारे bones का होता है ना, वो phosphorus और calcium की combination से होता है. Okay, vitamin D से क्या होता है? जो vitamin D हम लोग as we know, vitamin D what we get from sun. So vitamin D we do not get from sun. Vitamin D is get activated because of sun rays. Vitamin D is in our body, is in our it's in our skin. But what this vitamin D get activated when we are under sunlight. Okay, under sun rays. So vitamin D what get activated? Vitamin D we do not get from sun rays, sunrise or sun rays or sunlight. ओके, सो विटामिन डी गेट एक्टिवेटेड. अभी हमें एक मिथ क्या होता है कि हमें जो सन की रेज मिलती हैं उससे क्या होता है, उससे हमारी स्किन में क्या हमें विटामिन डी मिलता है, ऐसा हमें कंसेप्शन होता है. पर ये गलत है. आपकी बॉडी में विटामिन डी ऑलरेडी होता है, आपकी स्किन में ऑलरेडी होता है. बस सनरेज है उससे क्या होता है, वो एक्टिवेट होता है.
ओके। तो उस वजह से क्या होता है, विटामिन डी जब आपकी बॉडी में होता है, जब वो एक्टिवेट होता है, तब वो क्या करता है, कैल्शियम का इंटेक जो है, जो एब्सॉर्प्शन है वो बढ़ाता है। ओके, जो फॉस्फोरस है फ्रॉम गट या फिर फॉस्फोरस ऑफ कैल्शियम का क्या होता है, इंटेक वो क्या करता है, बढ़ाता है। ओके, जो एब्सॉर्प्शन है, मतलब समझिए, अगर अपने विटामिन डी है, विटामिन डी का अगर आपकी बॉडी में एक्टिवेटेड है, जो अगर तो आपने उस टाइम पे अगर कैल्शियम फॉस्फोरस का इंटेक लिया, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी वो डाइजेशन वो अब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है, आपके बोन्स में, आपके स्किन में, आपके हेयर्स में, आपके मसल्स में। तो वो क्या होता है, वहां पे विटामिन डी की वजह से वो अब्सॉर्ब कर पाते हैं। ओके, सो विटामिन डी का वो प्रोसेस होता है। आई होप यहाँ तक सब कुछ चीजें समझ रही हैं। किसको अगर नहीं समझ रहा है, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ओके। Magnesium and fluid or also play roles in mineralizing bones. मैग्नीशियम एंड फ्लूइड्स क्या होते हैं, आपके जो रोल है, जो मिनरलाइजिंग बोन्स है, उसमें क्या करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं। व्हाट मिनरलाइजिंग मतलब, ये मैग्नीशियम फ्लूइड क्या करते हैं, बोन्स को मिनरल्स मिलने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, टू absorb द मिनरल्स, मैग्नीशियम एंड फ्लोराइड्स हेल्प इन दैट प्रोसेस। ओके, several protein associated with bone turnover, for example osteocalcin. What osteocalcin is a protein which associate with bones. Okay, these are required, so vitamin K is required for this kind of synthesis. Okay, so best source of calcium, what is that? The dairy food group and the milk, cheese, yogurt, ये सारी सारी चीजें क्या है, कैल्शियम है। These are rich in calcium. Okay, what dairy food, milk and cheese and yogurt. Okay, phosphorus is found in most food that are high in protein. Okay, जो high in protein रहती है, like chicken, paneer, fish, all these things, there phosphorus is found in that. Cheese. Okay, small amount of vitamin D exists in our skin as 7-dehydrocholesterol, which is activated upon exposure of ultraviolet B or UVB rays. As we discussed, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट उसका हमारे स्किन में ऑलरेडी होता है, जो 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होता है। जब आपकी बॉडी पे क्या एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट बी यानी यूवीबी रेज होती हैं, तब वो क्या होता है, और वो एक्टिवेट हो जाता है। Okay, what small, there is always vitamin, small amount of vitamin D exists in your body in a form of 7-dehydrocholesterol form, which get activated once there is exposure to ultraviolet B or UVB rays. Okay, sun exposure recommendation is vary from 6 minutes to 40 minutes per day. Now again, this depends on person to person who can handle this. But it is required for what, 6 minutes to 40 minutes. It is required for sun exposure is required for your body. Physical activity does not appear to increase calcium or vitamin D losses or turnover. What physical activity का क्या है? फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम या फिर विटामिन डी का लॉस या फिर बढ़ना या फिर अब्जॉर्ब होना, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। ओके, फिजिकल एक्टिविटी और विटामिन डी या फिर कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन या फिर कैल्शियम का लॉस, ये सारी चीजें इतनी कनेक्टेड नहीं है। इट हैज सम कनेक्शन बट नॉट दैट कि बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। ओके, ओके। So in fact, regular exercise, especially resistance activity, increase bone density by stimulating bone building mechanism. Now what? अभी आप देखिए, अभी नाउ आई कैन गिव अ बेसिक एग्जांपल। ओके, सो अभी मेन देखिए क्या होता है, जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, तो बॉडी को क्या आदत हो जाती है टू इंक्रीज बोन डेंसिटी। जो आपकी बोन की डेंसिटी है, आपके बोन जितने, एज यू नो व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी मतलब अगर कोई चीज है ये खाली है, ओके दिस इज अ खाली, ये क्या हो गया, मतलब इतना खाली है, ये पूरा डेंस नहीं है, पर ये जो है क्या, ये डेंस है। ओके, दिस इज व्हाट डेंस। ओके, सो ये डेंसिटी है, what increases bone density of your body, what because of regular exercise। जो क्या होता है, आपकी कैल्शियम ऑब्जॉर्ब करना, जो भी मिनरल्स है वो अच्छे से ऑब्जॉर्ब करते हैं। ओके, what because of resistance training, what is resistance training, resistance training is like working out in a gym। ओके, वर्किंग आउट लाइक वेट ट्रेनिंग जो होती है, जो तो वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सारी चीजें क्या है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। सो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, वो अच्छे से यू नो
अब्सॉर्ब कर पाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है आपके बोन्स की। ओके, ओवर ट्रेनिंग है, ओवर ट्रेनिंग क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है चीजें। अब ये ओवर ट्रेनिंग क्या होता है? ओवर ट्रेनिंग आप ये बोल सकते हो ना कि किसी पर्सन का इनफ न्यूट्रिएंट नहीं है इनटेक, और फिर भी वो बहुत ज्यादा काम किए जा रहे हैं। अभी इसके लिए क्या है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, ओवर ट्रेन करते हैं। वो अगर आप जिम में वर्कआउट कितना करते हो, 1 आवर करते हो, ओके, 1 आवर इज नॉट ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग इज व्हाट द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, द साइट वर्कर्स, विच वर्क्स व्हाट 8 to 9 hours इन अ डे। जो क्या करते हैं, 8 to 9 hours क्या करते हैं, जो हैवी चीजें हैं वो उठाते हैं, रखते हैं, वहां से जाके दूसरी जगह पे लेके आते हैं, वो कंटिन्यू फिजिकल वर्क कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट ओवर ट्रेनिंग। नो, 1 hour, 1.5 hour is not overtraining in a gym. Okay, 1 hour, and if when you have right nutrition, it is not overtraining. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो क्या, उनके खाने में क्या होता है, काफी मिनिमल प्रोटीन, दाल राइस रहेगा, कभी कभार उन्हें अंडे चिकन खाए तो खाए। अदरवाइज क्या होता है, उनका मिनिमल इंटेक होता है, प्रोटीन इंटेक, न्यूट्रिशन इंटेक इतना होता नहीं है। बट वर्क क्या होता है, उनको 7 to 8 hours लेबर वर्क करना पड़ता है, 7 to 8 hours फिजिकल लेबर होता है उनका। सो फिजिकल लेबर में क्या, उनको हैवी चीजें उठाना, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। ओके, सो दिस इज व्हाट फिजिकल लेबर उनको करना होता है। सो ओवर ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, डिक्रीज होता है, जो उनके प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे ओस्ट्रोजन होता है, which plays a vital role in maintaining bone mass, especially in females. जो एस्ट्रोजन आपने सुना होगा, एस्ट्रोजन यूजुअली क्या होता है, फीमेल्स में बोन मास क्या होता है, मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। तो अभी उस टाइम पे क्या होता है, जब वो ओवर ट्रेनिंग करती है, अगर आपने देखा होगा, लेबर साइड में बहुत सारे लोग रहते हैं, जो लेबर्स रहते हैं कंस्ट्रक्शन साइड में, फीमेल्स भी रहती है उसमें, तो उनका क्या होता है, 8 hours कुछ ना कुछ काम करते रहो, हैवी वर्क, हैवी लोड यहाँ से वहां लेके जाना। अभी इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, उनका बोन मास काफी वीक हो जाता है। ओके, तो वो इजीली क्या होती है, उनकी जो बॉडी में पेन होना या फिर ओस्टियोपोरोसिस, ये सारी चीजें होना चालू हो जाती हैं। ओके, calcium status is difficult to measure because it is a bone acts as a calcium reservoir and serum calcium levels are maintained within relatively small window. अभी क्या होता है, आपकी बॉडी में जितना भी कैल्शियम है, whatever calcium you have in your body, it is difficult to measure. Why? Because your bones है, because of your bones are made up of what? Mostly calcium and phosphorus. So because of that, you cannot measure the accurate number of calcium level in your body. That's why what it is difficult to measure how much calcium it is you are deficient or not. Okay, so this is little difficult, but it is like there are some tests. Okay, there are some assumptions depend on your different kind of tests. Okay, vitamin D is what measured based on the circulating level of 25. Just a minute. Okay. Vitamin D status is measured as based on circulating levels of 25 hydroxy cholesterol. So vitamin D is what? How it is measured? It is like search for this specific 25 hydroxy cholesterol. So ये सर्च होके फिर क्या होता है, उसमें विटामिन डी का स्टेटस हमारी बॉडी में पता चल जाता है। विटामिन डी deficiency are those with dark skin, those who compete indoors, and those who live in high altitudes. मोस्टली क्या रहता है कि विटामिन डी में कौन सा डिफिशिएंट लोग रहता है, मोस्टली विच आर डार्क स्किन, या फिर जो इंडोर रहता है, मोस्टली इंडोर रहता है, ज्यादा आउटडोर जाते नहीं है, एंड हु लिव्स इन हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पे सनराइज काफी कम होता है, तो मोस्टली ऐसी चीजों पे ऐसे लोगों को क्या होता है, विटामिन डी डेफिशिएंट रहते हैं। It is also recommended that at least with disorderly eating and amenorrhea supplement in their diet 1,500 micrograms of calcium and 400 to 800 IU of vitamin D per day. So athletes का क्या होता है, recommendation different होता है than normal people. So it depends on their sport. It depends on their what kind of profession they have. According to that, vitamin D and calcium is recommended. Okay. Calcium has additional role in muscle contraction, in nerve conduction, and a blood clotting. Okay, blood clot. What is muscle contraction? Like whenever you move a muscle, like अगर आप बाइसेप के लिए हाथ स्ट्रेट कर रहे हो एंड देन फिर से आप डंबल ऊपर ले रहे हो, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो रिपीटेशन है, सो वो कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या कैल्शियम यूज होता है। नर्व कंडीशन, जो आपके नर्व्स है, जो आपके ब्रेन्स में नर्व्स है, जो उसमें जो नर्व्स पास होती हैं, जो ऑल एंड ऑल जो वर्क होता है,
तो वो वर्क के लिए क्या, जो ब्रेन नर्व कंडक्शन होता है उसमें भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगेन व्हाट, ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपके हाथ पे कुछ भी इंजरी होगी, अगर आपकी बॉडी पे कुछ भी इंजरी होगी, व्हेन यू गेट इंजर्ड, यू हैव व्हाट, अ सर्टेन टाइम तक आपका ब्लड फ्लो होता है, देन दैट ब्लड गेट क्लॉटेड, दैट कैपिलरीज वहां पे आ जाती है, और जो क्या होता है, ब्लड क्लॉट रुक जाता है, जो ब्लड क्लॉट हो जाता है वहां पे। तो वो क्लॉटिंग की वजह से क्या, और आपका ब्लड वेस्ट नहीं जाता और आपका ब्लडिंग होता नहीं है। तो व्हाट दैट, ब्लड क्लॉट में भी क्या, कैल्शियम यूज होता है, और कैल्शियम की वजह से वो ब्लड क्लॉटिंग काफी जल्दी हो जाता है। ओके, अगर वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुआ तो क्या हो गया, आप ड्रेन हो जाओगे, आपका ब्लीडिंग कंटिन्यू होता रहेगा, एंड यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट ड्रेन्ड। ओके, सो वो ब्लड क्लॉटिंग होता है, वो किस वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है। ओके, विटामिन डी हैज अ रोल इन मसल टिश्यू फंक्शन। जो मसल टिश्यू के फंक्शंस हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, विटामिन डी का उसका मेजर रोल होता है। ओके, ड्यू टू विटामिन डी रिसेप्टर इन skeletal muscle improves athletic performance in summer and exposure to UVB radiations। विटामिन डी की वजह से क्या होता है, द रिसेप्टर्स इन skeletal muscles improves what, एथलेटिक परफॉर्मेंस। जो एथलेटिक परफॉर्मेंस आपके समर में इंप्रूव होता है, वो क्या होता है, एक्सपोजर टू यूवीबी रेज की वजह से होता है। Okay. So vitamin D status is what, correlated with jumping height and velocity, muscle and strength power. And at present, there is insufficient evidence to set an optimal level of serum 25 for the athletes or to recommend vitamin D as an ergogenic aid. अभी विटामिन डी क्या है, अभी तक मतलब कितना लेना चाहिए एथलीट्स को, उसके ऊपर विटामिन डी पे अभी कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। देयर इज नो एग्जैक्ट मेजरमेंट दैट हाउ मच विटामिन डी शुड बी सप्लीमेंट टू एथलीट। It depends on person to person, as I said before. Okay, mostly this vitamin D is correlated what, jumping height and velocity and muscle strength, as in what, sprinting, running, okay, jumping. In these cases, vitamin D is correlated, but it is not accurate. Ki, haan, these things 100% surely helps in these things. It is not proven yet. It is like some assumption. According to assumption, it is provided to what, athletes, and it is person to person. It is not like this and this should exact, there is no exact measurement. Okay, iron is what, structural component in hemoglobin, as we saw. Heme, what is heme? Heme means iron. Okay, so that was hemoglobin. Yeah, iron is also a cofactor for enzyme that participates in electron transport chain and series of reaction that needs to for synthesize for ATP. What is iron? Iron is required as, iron क्या होता है, cofactor होता है enzymes में। जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपकी बॉडी में चेन है, जो पाथवे होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। फॉर दैट केमिकल रिएक्शन, what does that for reaction to happen, the iron is required. Okay, for ATP synthesis, for when your body makes ATP for energy, for there is also what, iron is required. Iron have a role in energy production and cell metabolism. It is essential nutrient for athletes, especially endurance athletes. Usually what, iron have a role in energy production, जो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होता है। when there is energy production, a cell metabolism, यानी क्या, नया सेल फॉर्म होता है। एज आई सेड, हमारी बॉडी क्या करती है, डे टू डे बेसिस पे जो सेल्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं उनको डिस्कार्ड कर देती है, एंड जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको नए सेल्स फॉर्म करती है। तो वो जो नया सेल का फॉर्मेशन होता है, द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यू सेल, you know, this metabolism of discarding and making a new cell. So in that process also iron is required. Okay, it is essential nutrient for athletes, especially endurance athletes. जो endurance athletes है, जो normal athletes है, अभी उन athletes में क्या होता है, mostly athletes, especially endurance athlete, it is required. Why? Because their body क्या होती है, उनकी जो मेटाबॉलिज्म होता है उनका काफी हाई होता है। तो वो क्या होता है, जो नंबर ऑफ सेल्स जो ब्रेक डाउन होने, द नंबर ऑफ सेल्स जो उनको न्यू फॉर्म करने हैं, वो एथलीट्स में कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन थोड़े ज्यादा होते हैं। इसलिए क्या होता है, आयरन जो है मेजर रोल प्ले करता है इसमें।
iron needs for athletes can be more than 70% higher than general population. आपकी हम general population which we work out 1 hour a day, which we work for 9 to 5 work, and then we go home, we take our lunch, we take our dinner, but then we take 6 to 7 hours rest. So compared to the athlete requires what? Compared to us, compared to normal people, athlete requires 70% higher iron, okay, than normal. ओके, रिस्क ऑफ आयरन डिफिशियंसी. अभी रिस्क ऑफ आयरन डिफिशियंसी क्या होती है? एडोलेसेंस यानी जो यंग एथलीट्स हैं, ओके, जो टीनेज, जो यंग एथलीट्स है, उसमें क्या होता है कि रैपिड ग्रोथ रहती है, तो उनमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स आयरन की थोड़ी ज्यादा होती है. वेजिटेरियन एथलीट्स, प्लांट एथलीट्स आर क्या होते हैं, पुअरली अब्सॉर्ब होते हैं. as we said, as we discussed in last lectures also, what we are a carnivorous animal. हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का जब आप इंटेक करते हो, योर मेटाबॉलिज्म वर्क्स बेस्ट एंड योर बॉडी अब्सॉर्ब्स दोस एनीथिंग फ्रॉम दैट which is from animal protein or animal food. Okay, what our body absorbs at its best. Like अगर आपने चिकन या फिर पनीर खाया है, तो उसमें क्या 80, 70, 80, 90% क्या होती है, आपकी बॉडी अच्छे से वो ऑब्जॉर्व करती है. उसमें जितना भी प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन है, जो भी है, वो सारी चीजें क्या होती है, बॉडी अच्छे से ऑब्जॉर्व कर लेती है. बट वही अगर आप कोई वेजिस खा रहे हो, तो वेजिस में क्या होता है, हम वेजिस क्या है, एक प्लांट है. प्लांट किसके लिए अच्छा होता है? हर्बीवोरस एनिमल के लिए. यानी प्लांट क्या, हॉर्सेस के लिए अच्छा है, काउ के लिए अच्छा है, बफेलो के लिए अच्छा है. क्यों? क्योंकि उनका जो एनिमल है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या, हर्बीवोरस है. तो हर्बीवोरस होने की वजह से जो प्लांट्स में जो भी प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन है, एक हर्बीवोरस एनिमल क्या 100% डाइजेस्ट कर पाता है, 70%, 80%, 90%. एट हिज कैपेसिटी वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है. बट वॉट वी आर एज अ ह्यूमन्स आर कार्निवोरस एनिमल. सो कार्निवोरस एनिमल होने की वजह से जो भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स है, वो हम लोग अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं, 80%, 90%, 100%. एज आई सेड कि लाइक अगर चिकन है, अंडे है, पनीर है, दूध है, दही है, चीज है, इन सब में जितने भी मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन्स है, वो हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है, अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाती है. Okay, why? Because we are carnivorous animals and the horses are what? Herbivorous. Horses, cow, any vegetarian animal is what? Herbivorous animals, and we are what? Carnivorous animals. Okay, so that's why there is a this things कि plant based sources जो रहते हैं, जो plants में जो iron होता है, वो poorly absorb होता है, हमें 100% अच्छे से absorb नहीं होता. Okay, during menstruation and iron it's excreted through blood loss. जो menstruations होते हैं फीमेल्स में, एवरी मंथ जो मंथली साइकिल्स मेंस्ट्रुअल्स के होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, जो ब्लड होता है, वो ब्लड में क्या होता है, आयरन जो है वो बाहर एक्सक्रीट हो जाता है. ओके, बॉडी सेक्रेट करती है. ओके, athletes who undertake altitude training increase production of red blood cells requires iron along with what other nutrient. What altitude I could say altitude training यानी जो ट्रैकिंग पे जाते हैं, जो माउंटेन्स है वहां पे क्लाइंब करते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग रहती है, इन सारी चीजों में क्या होता है, उनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं. तो उस टाइम पे क्या होता है, उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उनके न्यूट्रिएंट एज एन B12 एंड फोलेट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बॉडी में. Okay, so this is what a test, a type of test you can see, जो डॉक्टर्स है, यूजुअली फिजिशियन है, वो रिकमेंड करते हैं. सो रिकमेंडेशन क्या होती है यूजुअली आयरन की? डिपेंड्स ऑन जेंडर, एज, रेंजिंग फ्रॉम 8 mg to 18 mg or to 27 mg per day, and in pregnancy also it depends. Okay, iron found in what? Red meat and dark poultry is more readily available sources iron, and 18% is absorbed by our body. Our body absorbs what? 10% of non-heme iron from vegetables. जो नॉन हिम आयंस रहते हैं, जो वेजिटेबल्स में रहते हैं, वो 10% तक हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व कर पाती है. ओके, नाउ विटामिन सी. Vitamin C is what? As we say, what is vitamin C? Vitamin C is what? Vitamin. It is not a mineral. Now हमारे यहाँ पे मिनरल हो गया, अभी हम लोग क्या विटामिन स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, विटामिन सी क्या होता है? अर्थ कंजक्शन विद अ मील improves the absorption of non-heme iron. ओके, जो नॉन हीम आयन रहता है, विटामिन सी हेल्प करता है डाइजेस्ट करने के लिए. आयरन फीड्स फॉर फ्री रेडिकल्स which attack cell walls and DNA causing disease.
आयन की वजह से कभी कभी क्या होता है, फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। फ्री रेडिकल्स यानी क्या, टॉक्सिसिटी। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था, मिनरल्स क्या करते हैं आपके बॉडी में, कभी कभी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं अगर वो एक्सेस हो गए तो। विटामिन सी का ऐसा नहीं है, अगर विटामिन सी, विटामिन बी आपने अगर एक्सेस अमाउंट में लिया, कोई भी टाइप का विटामिन सी, तो आपकी बॉडी क्या कर देती है, सेक्रेट कर देती है। नहीं रिक्वायरमेंट है तो बाहर रिलीज कर देती है बॉडी में से। पर मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स अगर आपने एक्सेसिव इनटेक में ले लिए तो आपकी बॉडी में क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। ओके, तो वही होता है कि जो आयन कैसे हैं, अगर आप लिमिट में लेते हो तो आपका, इफ यू टेक इनटेक ऑफ आयन इन अ right amount in body's requirement, then it is okay. If you take more, it will create free radicals. Free radicals यानी क्या, अटैक जो है, जो अटैक करते हैं, जो आपके सेल्स है उनको अटैक करते हैं, आपके डीएनए है उनको अटैक करते हैं, जो डिजीज है वो क्रिएट करते हैं। Okay, so that kind of mess created gets created because of what, higher or excess intake of any mineral, and usually it is iron. So that's why you should never take supplementation of any minerals without any consultation. Okay, more iron means more damage and more disease. That's why क्या है, आयन क्या है, एक लिमिट में लेना चाहिए, या फिर जितनी रिक्वायरमेंट है वो अंडर गाइडेंस और अंडर फिजिशियंस रिकमेंडेशन ही आपको लेना है। Okay, iron suppresses to the immune system and promotes cancer cells and growth and triggers the creation of blood clotting and platelets, which is increased risk of heart disease and other strokes. Okay, so iron का intake जो है आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट में, मिनिमम अमाउंट में लेना चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज टेक आयरन अंडर अ फिजिशियंस गाइडेंस एंड सुपरविजन ओनली। You should not, अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है, जैसे nowadays in social media like people say हाँ ये हो रहा है ना तो you have this iron deficiency, but we should never take any iron supplementation without any your physician's recommendation. Okay, so iron is carried around the blood by the protein called transferrin. When the blood iron stores in low, the TIBC increases and the transferrin can bind to more of available iron to the same time of SF level drop. सो यूजुअली क्या होता है, आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी के अराउंड जो कैरी होता है आयन, आयन किससे, ट्रांसफरिंग नेम प्रोटीन है वो कैरी करता है। और ट्रांसफरिंग प्रोटीन क्या करता है, सब जगह पे जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वहां पे आयन दे देता है। अगर आयन कम हो गया बॉडी में तो वो क्या करता है, ढूंढता है कि कहाँ कहाँ पे बॉडी में अवेलेबल आयन पड़ा हुआ है, तो वहां से जमा करो एंड फिर से प्रोवाइड करो। ओके, ट्रांसफरिंग क्या होता है, एक तरह से कैरियर होता है। ओके, जो उसको कैरी करता है एंड देन यहाँ वहां वो जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां वहां पे सबमिट करता है। ओके, तो ट्रांसफरिंग का सैचुरेशन है। टीआईबीसी एक सेल का टाइप होता है, जो टीआईबीसी क्या होता है, वो इंक्रीज करता है आपकी बॉडी में। इट्स अ टाइप ऑफ सेल। ओके, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं, जैसे रेड बीसी आपने आरबीसी सीखा होगा, डब्ल्यूसी देखा होगा, तो वो क्या एक तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। ओके, so when transferrin saturation is below 16%, then body expressing an early function of iron deficiency. जैसे आपने देखा होगा, जैसे ट्रांसफरिन प्रोटीन अगर आपके बॉडी में कम है तो आपने देखा होगा कि आप बैठते हो एंड देन सडनली आप खड़े हो गए ना तो आपको थोड़ा एक ब्लरी फील होता है, जो विमेंस में काफी होता है। तो ट्रांसफरिन क्या होता है, आप वो अगर उसका सैचुरेशन उसकी बॉडी में अगर लेवल उसका कम है ट्रांसफरिन का, तो एज वी सी अगर आप बैठे हो सडनली खड़े हो जाते हो या फिर आप सोए और सडनली बैठ जाते हो उठ के, तो आपको एक डिजीनेस फील होता है। ओके, दैट डिजीनेस व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिन सैचुरेशन। जो ट्रांसफरिन प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में बिलो 16% से ज्यादा कम हो जाता है, तो वो आपको ये सारे सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं। Okay, if iron deficiency progress further, the body is unable to make hemoglobin, and because of that, deficiency of anemia causes. अभी मोस्ट ऑफ द वुमेन्स देखिए क्या हो ना, इस चीजों के बारे में अवेयर नहीं होते, तो 30s में बहुत सारी वुमेन्स है जो एनीमिक होती हैं, जिनमें ब्लड क्या होता है, कम होता है, आयरन डिफिशियंसी कम होती है, इस वजह से हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एक दूसरे से डिपेंडेंट होती है, एक चैन होती है। तो इस वजह से क्या होती है, बहुत सारी फीमेल्स है जो एनीमिक होती हैं, और बहुत सारी फीमेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। ओके, हीमोग्लोबिन लेवल कम किस वजह से होता है, क्योंकि ट्रांसफरिन प्रोटीन कम हो जाता है। ट्रांसफरिन प्रोटीन वो है जो आयरन कैरी करता है, आयरन नहीं होता तो हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ब्लड अच्छे से नहीं बनता, और इस वजह से क्या होता है, जो फीमेल्स मोस्टली रहती है वो एनीमिक रहती है। और बहुत सारी इंडिया में फीमेल्स है जो एनीमिक है, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी बॉडी में अभी हीमोग्लोबिन कम होना ये काफी नॉर्मल बात बताई जाती है। अगर डॉक्टर के पास आप जाते हो तो टेस्ट करके क्या बोलते हैं वो, हाँ बस ज्यादा कुछ नहीं, हीमोग्लोबिन कम है।
तो हीमोग्लोबिन कम है इस चीज को बहुत लाइटली लिया जाता है, बट दीज थिंग्स कैन लीड्स टू मोर डेंजरस थिंग लाइक बीइंग एनेमिक डिफिशियंसी, जो ब्लड है वो कम होना, ये सारी चीजें वहां पे जा सकती हैं। ओके, the supplement increase the working capacity of reduced heart rate and deficiency of lactate count, but it is poorly tolerated by the guts. यूजुअली क्या होता है, जो सप्लीमेंट्स रहते हैं वो क्या रहता है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी क्या होती है, हार्ट रेट का थोड़ा कम कर देती है, मतलब हार्ट रेट डिक्रीज कर देती है। जो लैक्टिक फोन है वो पोरली एकदम टॉलरेट हो जाता है गट से, लाइक है कि वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ओके, इट इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। Supplementation, what it is increased working capacity and reduced heart rate. Okay, so it is needed for the what synthesis of DNA. Due to its support the growth and healing reproduction is immune function. Okay, 2/3 of iron is inside what heme, found in hemoglobin. Okay, so myoglobin is a what part that contains heme and found in muscles. जैसे मायोग्लोबिन आपने कहाँ पे सुना होगा, जो मसल्स है, जो मायोफाइबर्स होते हैं, वहां पे जो मसल्स होते हैं वहां पे क्या होता है, हीम कंटेन करता है, और उसमें क्या होता है यूजुअली मसल सेल्स में होता है, वहीं पे ज्यादा करके आयरन भी फाउंड होता है, और वहां से वो ज्यादा, अगर इनकेस आपकी बॉडी में डिफिशियंसी हो गई तो वहां से वो लिया भी जाता है एज वेल एज वहां पे स्टोर भी किया जाता है। ओके, when oxygen is not readily available from blood, myoglobin is released the stored oxygen for the use of muscle cell. जैसे आपने देखा होगा, अगर बहुत टाइम तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, आपको ऐसे सराउंडिंग में हो जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम है, तो आपकी बॉडी में क्या मायोग्लोबिन है, वहां पे स्टोर होता है ऑक्सीजन, वहां से वो रिलीज हो जाता है। ओके, आयरन डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बॉडी में क्या होता है, 60% क्या होता है आयरन हीमोग्लोबिन में होता है, 15% मायोग्लोबिन में होता है, और 25% जो होता है वो स्टोर्ड आयरन होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स होते हैं। ओके, सो कॉपर क्या होता है, कॉपर क्या होता है, जो असिस्ट, कॉपर क्या करता है, असिस्ट करता है आयरन को फ्रॉम लिवर टू बोन मैरो फॉर आरबीसी फॉर्मेशन। आपकी जो बोन्स है, आपकी जो बोन्स है वो बोन मैरो जो है लिवर में, एक तरह से क्या होता है, जो बोन मैरोज है वो क्या आरबीसी बनाते हैं। ओके, सो जो फ्रॉम लिवर टू व्हाट टूवर्ड्स बोन मैरो क्या होता है, असिस्ट कौन करता है आयरन को जाने के लिए, कॉपर असिस्ट करता है। एनीमिया इज व्हाट, थोड़े से ये ज्यादा नहीं है, आपको जस्ट आयरन और विटामिन के बारे में ही थोड़ा बताया है। सो दैट्स आई एक्सप्लेनिंग यू कि बहुत ज्यादा डीप नहीं, आपको बस सुपरफिशियली थोड़ा समझना है ये सब आयन और इनका रोल क्या है। इट इज नॉट लाइक कि हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल नहीं, बट थोड़ी सी स्लाइड्स बाकी है। Okay, so anemia is one of the what clinical sign of both copper and ferrous, like copper and iron deficiency. Okay, vitamin A is what improves status of pregnant women and children. Combination of iron supplement with vitamin A is more effective for anemia than alone supplement. Okay, vitamin E is what improves the status of pregnant women and children. Okay, iron supplementation combination of with combination of iron supplement. Okay, and iron supplementation with A is more effective for anemia. Okay, now absorption of zinc. Zinc absorption is interfere with ferrous. तो अभी क्या है, आपको जिंक कभी भी आयन के साथ ले लेना है, क्योंकि जिंक जो है उसका अब्सॉर्प्शन आयन के साथ अगर आपने लिया तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए अगर जिंक का सप्लीमेंटेशन भी अगर आप ले रहे हो तो उसका डिफरेंट टाइम होना चाहिए, और आयन पर सप्लीमेंटेशन का डिफरेंट टाइम होना चाहिए। ओके, कैल्शियम किसके आयन के अब्सॉर्प्शन के टाइम पे भी हेल्प ये करता है, थोड़ा प्रॉब्लम विद डिफिकल्टीज, इसलिए कैल्शियम और आयन का भी इंटेक एक साथ नहीं होना चाहिए। ओके, ओके, जब अमाउंट कैल्शियम है क्या, अगर लेस देन 1000 mg आप ले रहे हो तभी प्रॉब्लम अराइज नहीं होती, और अगर मोर देन 1000 ले रहे हो, जैसे एथलीट्स रहते हैं तो उनके टाइम पे उनके सर्टन टाइम्स रहते हैं, सर्टन टाइम पे ही उनको वो टैबलेट्स या फिर सप्लीमेंटेशन बताया जाता है। फॉलेट क्या है, विटामिन डी B12 के साथ उनको जरूरी है, जैसे अगर आपने किसी प्रेग्नेंट वुमेन के अगर सप्लीमेंटेशन देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा विटामिन फॉलिक एसिड विद B12।
क्या फॉलिक एसिड क्या होता है, B12 के साथ अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, सो ये एक हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, तो सिंथेसाइजेस वो मिथियोनिन। मिथियोनिन ये सारी चीजें क्या है आपको, जो बी कॉम्प्लेक्स के आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं, तो उसके डाइजेशन में जो एक है कि मिथियोनिन फ्रॉम होमोसिस्टीन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टू प्रिवेंट बिल्डअप ऑफ होमोसिस्टीन इन ब्लड। An elevated level of homocysteine in blood associated with thickening of arterial wall and arterial wall deterioration for blood clot formation। अभी ये क्या है कि होमोसिस्टिन लेवल जो बॉडी में रहता है, इन योर देयर इज अ होमोसिस्टिन लेवल इन योर बॉडी व्हिच इज एसोसिएटेड विद ब्लड थिकनिंग। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, क्लॉट डिटोरेशन के लिए वो हेल्प करता है, और ये करता है क्लॉट डिटोरेशन के लिए और प्रमोट करता है। इसलिए उस टाइम पे क्या होता है, ये जो इंटेक है, जैसे होमोसिस्टिन कोई भी आप देखिए, कोई भी एक स्पेसिफिक सप्लीमेंटेशन आपको बताया गया है ना, तो उसका इंटेक आपको सप्लीमेंटेशन का स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगेन वो आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही करना चाहिए। जो स्पेसिफिकली बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी है, बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन हैं, वो आपको क्या है, बी कॉम्प्लेक्स में स्पेसिफिक इंटेक आपको नहीं करना है। आपको जो ओके, हाँ देखिए पिक्चर स्पेसिफिकली देखिए, मैं आपको सुपरफिशियल थिंग बता देती हूँ। आपको जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आपको उनका स्पेसिफिक इंटेक नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस आपको कोई फिजिशियन करता है, क्योंकि विटामिन बी बी कॉम्प्लेक्स के भी जितने हैं ना विटामिन, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट करते हैं अगर आपने सप्लीमेंटेशन उनका एक्सेस कर लिया तो। ओके, इवन दो इट इज अ विटामिन, बट बी कॉम्प्लेक्स में अगर स्पेसिफिक इंटेक किया तो, स्पेसिफिक अगर कोई जैसे B6 B12 कोई भी, ओके, तो वैसे ये उसमें हार्म करता है। ओके, तो आपको जो PDF शेयर होगी उसमें आपको अच्छे से स्क्रीन दिखेगी। Vitamin B6 is also what needed a lower homocysteine level in blood. Vitamin B12 contains what, cobalt. It is called as cobalamin. Okay, B12 is converted in homocysteine to methionine. Vitamin B12 is needed to make the red blood cells. It helps in DNA synthesis in rapid dividing cells in bone marrow. Again, vitamin B12 is required for body, but you should not take intake of this vitamin B12 or B6 without any doctor's or any physician's recommendation. It is required in everyone's body different quantity. Okay. Folate cannot be properly utilized if B12 is low and absent, because B12 is needed to convert methyl folate to activated form. अभी क्या होता है, folate है, folate का जो utilization है body में नहीं होता, B12 नहीं है, तो इसलिए आपने अगर फॉलिक एसिड का कोई भी सप्लीमेंटेशन देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि B12 साथ में होता ही है। ओके, अडल्ट्स का क्या होता है, 2.4 mg तक विटामिन B12 का रिक्वायरमेंट होता है, बट बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें आपको बी कॉम्प्लेक्स से मोस्टली सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ओके, Okay, so zinc and magnesium both are what, cofactors of several enzymes involved in energy metabolism. Okay, आपकी बॉडी में जो जिंक एंड मैग्नीशियम है, जिसका आप अगर इंटेक भी करते हो, मिनरल्स है, उनका रोल क्या होता है, ग्रोथ या फिर बिल्डिंग या फिर रिपेयरिंग आपके टिश्यूज है और इम्यून स्टेटस है, वहां पे वो हेल्प करते हैं। मैग्नीशियम इज व्हाट नीडेड फॉर टिश्यू एंड इम्यून फंक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैग्नीशियम इज व्हाट नीडेड टू इम्यून फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी आपकी बॉडी में जो, जिससे मैंने बताया प्रोटीन है डिफरेंट, जैसे हमने देखा ट्रांसपेरेंट प्रोटीन था, वो क्या करता है, आयन कैरी करता है। आपके हेयर्स में जो है प्रोटीन, जो आपकी स्किन में है, ये सारी प्रोटीन क्या क्या है, सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, मैग्नीशियम हेल्प करता है। 85% ऑफ टोटल बॉडी जिंक इज फाउंड इन व्हाट, स्केलेटल मसल्स एंड बोन्स। Zinc what stabilizes the structure of number of protein, and zinc helps certain protein to fold by attaching the amino acids as cysteine histidine. This folded protein have zinc finger like structure, and this structure is stability. Usually क्या है, ये zinc का structure है जो क्या करता है, हेल्प करता है टू सर्टन प्रोटीन टू फोल्ड अटैचिंग अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको अटैच करने में वो हेल्प करता है जिंक। This structure is important for protein that regulates hormones such as testosterone. जो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं मेल्स के और फीमेल्स के भी रहते हैं, कम लेवल पे रहते हैं, वो स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है, वो क्या रेगुलेट करता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रेगुलेट करता है। जिंक कैन रिड्यूस द absorption of copper.
तो इसलिए क्या होता है, जिंक और कॉपर का इंटेक कभी एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिंक क्या करता है, रिड्यूस करता है कॉपर का इंटेक, जो अब्जॉर्प्शन रहता है। ओके, द हायर लेवल ऑफ आयरन इन जिंक, द हायर लेवल ऑफ आयरन डिफिशियंसी इन जिंक अब्सॉर्प्शन। जो क्या होता है, अगर हायर लेवल ऑफ आयरन आपकी बॉडी में है तो जिंक का अब्सॉर्प्शन भी अच्छे से नहीं हो पाता। ओके, zinc is what? Zinc is needed to provide to produce an active form of vitamin A. जो आपकी बॉडी में विटामिन ए है, रेटिनॉल है, उसको क्या होता है, उसके प्रोडक्शन में जो एक्टिव फॉर्म में प्रोडक्शन है उसके हेल्प कौन करता है, जिंक करता है। जिंक रिकमेंड कितना किया जाता है, 8 to 10 mg अडल्ट में किया जाता है और 2 to 6 mg चिल्ड्रंस में किया जाता है, एंड अपर लिमिट इसकी 40 mg है। अगेन यू शुड टेक दिस सप्लीमेंटेशन अंडर अ फिजिशियंस गाइडेंस ओनली। You should never take this supplementation without anyone's guidance, because this can create toxicity in your body. Okay, aerobic energy production के लिए भी क्या होता है, मैग्नीशियम हेल्प होता है, एंड deficiency of magnesium can slow down the energy production cycle. Okay, magnesium is what? Patent vasodilator, यानी क्या है, आपके ब्लड जो ब्लड फ्लो हो रहा है, मैग्नीशियम की वजह से क्या होता है, ब्लड थिकनिंग नहीं होती। जो ब्लड थिकनिंग का जो हमने इश्यू पहले पढ़ा था वो नहीं होता है। वो क्या है, वेसोडायलेटर, यानी कि आपका ब्लड जो है क्लॉट नहीं होने देता और अच्छे से ब्लड फ्लो होने देता है। आपका ब्लड प्रेशर क्या रहता है कि लो रखता है, नॉर्मल रखता है। ओके, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम वर्क टुगेदर टू कोऑर्डिनेट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। आपकी बॉडी में जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वहां पे क्या मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हेल्प करते हैं। Adequate intake level for adults like 300 mg and 4 to 420 mg. It depends on adults person to person. And upper limit is 350 mg for supplemented dosage. Okay. Now potassium sodium chloride. These are what? Fluid balance. आपके बॉडी में जो भी आपने देखा होगा, आपको क्रैम्प्स आते हैं, जो भी मसल कॉन्ट्रैक्शन कभी कभी अच्छे से नहीं होता, तो ये क्या होता है, फ्लूइड बैलेंस के लिए हेल्प करते हैं। दीज आर व्हाट? लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। द पोटेशियम द मेन कैटायन रहता है इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, सोडियम इज ऑल्सो मेन कैटायन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड, एंड क्लोराइड क्या रहता है, द मेन एनायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो ये आपके जो ब्लड सेल्स हैं, आपके जो सेल्स है, आपके मसल सेल्स है, हर एक सेल में ये तीनों होते हैं। इसे देखिए, आपको कभी भी ना एक बिजीनेस फील होती है, या फिर आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, फिर बहुत ज्यादा आपको क्रैम्प आता है, तो आप क्या सॉल्ट मिक्स कर सकते हो, या फिर सॉल्ट वाटर मिक्स करके लीजिए, तो उसमें भी क्या पोटेशियम सोडियम क्लोराइड होता है। या फिर अगर आप कोकोनट वाटर लेते हैं, उसमें भी क्या होता है, ये तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। आपको अगर क्रैम्प आ रहा है, डिजीनेस आ रहा है, वो तुरंत और इंस्टेंट सॉल्व हो जाता है। ओके, तो यहाँ तक हमारा एंड हो गया है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो अभी नाउ वी विल टेक डाउट सेशंस। किसी को कुछ भी माइक्रो न्यूट्रिएंट में नहीं समझा है? Anyone has any doubt regarding today's lecture, micronutrient? Yes, you will get the PDF. Anyone else has any doubt? Yeah, sure, no problem. You can check the PDF, yes, and you can write down the doubts. And for FAT lecture, I will ask Prathamesh sir again, if he has any English recording of our FAT lecture or FAT topic, he will send you. Otherwise, in any upcoming lecture, we will take a recap of a FAT topic of 10 or 15 minutes. Okay? हाँ क्योंकि आज हमारे क्या है, स्टूडेंट्स है जो बोथ लैंग्वेज में है, तो थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश दोनों लेना पड़ रहा है। पर आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, इंग्लिश की बहुत ज्यादा इंग्लिश हो रहा है, आप मैसेज डाल सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक टॉपिक आप हिंदी में मेंशन कीजिए या फिर हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, बस आपको एक मैसेज डालना है। आप हेजिटेट मत कीजिए, क्योंकि क्या है, मोस्ट ऑफ लोग जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, उनको हिंदी इतनी अच्छे से नहीं समझ में आ रही है, तो इसलिए हम मुझे दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप मैसेज डालिए कि आपको एक सर्टेन टॉपिक नहीं समझा है, तो हम वो हिंदी में भी फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, हाँ, ये सर को रिकमेंडेशन एक बार करेंगे हम लोग, अगर स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। यस यस यस,
I understand, Janesh, no problem. Everyone, like, there are certain type of groups. So in upcoming lectures, we will try to make a different batches for English and Hindi students also. So it will help both students. Okay. Okay. So anyone has any doubt about today's lecture? Yes, yes. You will get the today's recording of today's lecture. किसी को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई ऐसे आज के लेक्चर के रिगार्डिंग? Yeah, no problem. ये सबको लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. ग्रेट. ओके, तो फिर किसी को कुछ अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग लेक्चर एंड करने वाले हैं. ओके. ओके. ठीक है. ठीक है, आज का लेक्चर एंड हो गया है. जिसको लेफ्ट करना है लेफ्ट हो सकते हैं. अगर किसी कुछ डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हैं. अदरवाइज वी विल एंड